Chairman and Managing Director, Shri Sanjay Sarusa, Director International Marketing and Operation, and Shri Manduri Srinivas, Director Operation and Business Development, DFCCIL, my colleagues, officials of DFCCIL, and esteemed guests and the media officials present here. We express our biggest gratitude to all of you for sparing your valuable time to attend this trade meet in a very short notice. Concourse Inland Container Depot at Dadri has achieved a physical throughput of 3,07,000 TEUs during the financial year 22-23 last year, and it is around 10% of company overall performance in terms of physical throughput. So ICD Dadri plays a very important role for the container corporation, and in this around 41,000 TEUs of the reefer traffic was handled during the last financial year. The terminal has handled around 4,200 inward and outward rakes, which includes LNG rakes also. So I am proud to announce that today is the, of course, historic day, and a much awaited double stack container train on the Western Dedicated Freight Corridor network has recently been started on 20th April 2023. Of course, the first train in the DFC from Dadri to Mundra was started. The inaugural run was run on the 31st of March 2023, but the double stack operation has started, and daily we are running a 1 or 2 double stack train directly to Mundra. And it is really beyond imagination that the first train has reached in 30 hours to Mundra. So, with the 180 containers, even the reefer containers reached in 30 hours is really remarkable. We can basically see a ray of hope that now the container can reach in a short time, which basically a demand of trade and the demand of ours. And of course, definitely the just-in-inventory concept can be implemented by way of this, both for the import and export. A lot of sometimes the checkout of the vessel used to be there. Now the trade is nothing to worry about that one. The speed of the train is almost more than 60 km per hour, which is beyond imagination, as compared to 20 km with the Indian Railways. And so trade will be benefited out of this new happening. And in addition to this transit time reduction, the Concourse has given a considerable benefit in the reducing the freight. So I think most of the trade members, our exporter importers and freight forwarder and the shipping lines, they must have received the circular about reduction in the trade, our tariff, which will be implemented with effect from 1st of May. Since the ICD Dadri is strategically located, we expect the trade will reap the benefits of this patronized step and patronize the traffic. Thank you very much. CMD Sahab, Shri Manduri Srinivas, Director DFC, Shri Kamal Jain, Executive Director Area 1, कॉनकॉर के मेरे साथियों और सब ग्राहकों और मीडिया के सभी साथियों का मैं कॉनकॉर की तरफ से स्वागत करता हूं। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से यहाँ समय निकाला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि पहले मिस्टर झिंगर और लोगों ने बताया, आईसीडी दादरी 2004 में स्थापित हुआ था और मुझे भी यहाँ के चीफ मैनेजर के रूप में कार्य करने का मौका मिला। करीब 1.25 साल मैंने काम किया। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का वर्किंग का, जो कि ट्रेड के सब लोग भली भांति परिचित हैं। और शुरू से ही कस्टम्स डिपार्टमेंट की भी ये कोशिश रही कि आईसीडी दादरी में हमेशा क्लीन कार्गो शुड कम। मतलब वाइट गुड्स के लिए ये नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा हब माना जाता है शुरू से ही, और रीफर एक्सपोर्ट्स के लिए भी नॉर्थ इंडिया का हब है, जिसमें ऑलमोस्ट करीब 3000 TEUs
करीब हर महीने हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं रीफर का। अब इसका जो ये डीएफसी से कनेक्शन हुआ है, ये एक बहुत बड़ा ICD दादरी के लिए एक माइलस्टोन है। इसके लिए मैं अपने डीएफसी के सभी अधिकारियों, सब इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने रिकॉर्ड समय में यह कनेक्शन स्थापित किया। कुछ दिन पहले हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उनके साथ काम देखने गए थे। हमको भी यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग इस काम को पूरा कर पाएंगे। डेफिनेटली इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए हैं, जिससे कि एक बहुत ही रिकॉर्ड समय में इन्होंने काम करके दिखाया, जिसके लिए हम सब इनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने इस एरिया को, NCR को इन्होंने डबल स्टैक की सौगात एक तरीके से दी है। इसके लिए DFC का बहुत बड़ा योगदान है। और अब हमने एक बहुत कॉम्पिटिटिव टैरिफ भी जारी किया है, जो कि आप सब लोगों को मिल गया होगा। अभी हम देख रहे हैं कि दादरी से करीब 2 डबल स्टैक ट्रेन हम डेली चला रहे हैं मुंद्रा की। मैं चाहूंगा कि हम पिपावा की भी 1 डबल स्टैक ट्रेन डेली चलाएं। इसके अलावा अभी हमारा इंपोर्ट दादरी का इतना नहीं है। मेरी सब शिपिंग लाइन्स और इंपोर्टर्स सब लोगों से ये अपील है कि आप हमें इंपोर्ट भी दीजिए, मुंद्रा पिपावा दोनों जगह इंपोर्ट दीजिए। तो वहां से भी हम 30 घंटे का टाइम अब बहुत जल्दी 24 घंटे में बदलने वाला है। और 15 मई के बाद मुंद्रा पोर्ट और दादरी के बीच का टाइम 24 घंटे हो सकता है, 22 घंटे हो जाए। और खटवास से हम लोगों ने गेटवे पोर्ट्स के लिए टाइम टेबल ट्रेन चलाई थी रेलवे के सहयोग से, जो कि एक बहुत ही सफल प्रयास रहा। कई शिपिंग लाइंस ने, मर्स्क ने खासतौर से रिटेल एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन दादरी से चलाई थी, जो हफ्ते में 1 दिन चलती थी, जो कि बहुत ही अच्छी पैट्रोनाइज हुई। तो जब ये 22 से 24 घंटे का ट्रांजिट टाइम हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि एक बहुत ही सब लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी और टाइम टेबल ट्रेन हम चला पाएंगे, जिससे कि वेसल्स कैच करने में आपको आसानी होगी। और प्रेडिक्टेबिलिटी जो कंटेनर मूवमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद एक प्रेडिक्टेबिलिटी इन डेस्टिनेशन, रीचिंग डेस्टिनेशन, जो कि एक लोगों को मिल जाएगी, जो एक इससे हमें उम्मीद है कि और ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हमारे पास आए। अभी हम लोग 3 लाख TU क्रॉस किया है। मेरी ये बहुत जल्दी कामना है कि 2 साल के अंदर हम लोग दादरी को 1 मिलियन TU टर्मिनल बनाएं, जिससे कि दादरी में पूरा पोटेंशियल है। जब इसको डिजाइन किया गया था तो इसमें JBs बनाई थी, और 1 मिलियन TU को कोई बहुत बड़ी फिगर दादरी के लिए नहीं होगी। अभी जो लाइट वेट कार्गो रोड से जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डबल स्टैक होने के बाद ये सब रेल पे आना चाहिए, जो कि देश के लिए भी अच्छा है। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, पोल्यूशन कम होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेलवेज। उस तरीके से, हर तरीके से कार्गो मूवमेंट सब रेल से होना चाहिए। हमने कॉन्कॉर में भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा नई से नई टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट का ध्यान रखते हैं। हमारे CMD साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 100 LNG ट्रेलर्स हम लोग डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि और पोल्यूशन कम करने में मदद मिलेगी। इसमें से दादरी को बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा नागपुर वगैरह में रखेंगे, खटवास में रखेंगे, बट दादरी को भी बहुत बड़ा LNG ट्रेलर्स का हिस्सा मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेंगी, जो कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके ग्राहकों की सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। बस मैं अपने स्पीच का विराम देता हूं और एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप ट्रैफिक लाइए, और इसके बाद जब 1 मिलियन TU दादरी को होगा तो हम लोग एक और ऐसी ट्रेन मीट करेंगे। थैंक यू। Good afternoon to everybody. Respected CMD Container Corporation, Kalyan Raman, Sanjay Swarup, Director International Marketing and Operations, Kamal Jain, ED Area 1, VK Singh, other colleagues from DFC and Container Corporation and esteemed guests. I am privileged to be here on the 20th anniversary of ICD Dadri, when we are excited about moving containers, double stack container trains in the newly opened section of Dadri Rewari. It was exciting for us,
It was a long-awaited project. DFC, as it is, has been one of the long-awaited projects nearing completion. Let me tell you, this 1,24,000 crores project, which has been the iconic project of Indian Railways, to solve the problems of line capacity as well as unmet demand to be catered to, is nearing completion. We have been looking for completion of this NCR to Western ports connectivity for the last 2 years, in fact. We were facing the problem of pandemic, as you are all aware. We had unfortunate demise of the project manager there in that, which has given a serious setback to the project and put us back. And you are all aware, in Aravali's, we have been facing problems with, I wouldn't say NGT problem, but it is restrictions in view of the environment, restrictions in view of the working conditions. In spite of all this, we thought we could do this project and start connecting Dadri to Western Dedicated Freight Corridor by June 22. But then other problems which we faced, some lawsuits and then clearances. Finally, sometime in January, when I have taken Kalyan Ramaji and Sanjay Swarup team, they said you can't open it. I came back and gave this information to my team that nobody is believing that we can do it before June. So this has been taken as a challenge, and I appreciate and I thank my entire team of engineers who have put in, including L&T, who has put in enormous efforts in making this feasible. If you go and see the work involved is huge. There's a big gauge of about 30 meters depth in which the train is going. We have to protect that gauge. And viaduct almost, which is kilometers of viaduct. It's a beautiful, when you see the picture of the train passing through that section, it's a beautiful panorama. But then the work involved is humongous. I appreciate the entire work done by our engineers, and it's a path-breaking system. I have pride in announcing that yes, on April 20th, when we have connected and started our inaugural train, this train could make it in 30 hours. The distance between Dadri to ICD Dadri to New Rewari station is only 126 kilometers, but it has taken 3 hours, which is bad in our parlance because we are supposed to be running at 100 kmph. So it should not take more than 1.5 hours, but because we were initially cautious and still track and everything we want to test it, we ran at 40 kmph, our overall average speed. Now we are confident. Yesterday when we ran the train, it has gone in 2 hours 15 minutes. We are confident that as the time goes by, the crew will be having full learning and the trains will move at full speed. We will not take more than 1.5 hours. So, as already freight expresses which have started from CMLK at Delhi to Palanpur, target time of 12 hours has been given by Railway Board to DFC. We have been achieving it in spite of diesel traction, everything, in 10 hours. Similarly, if we take it from Dadri to Palanpur, we will be looking at 10 hours, and Palanpur to Mundra, we will be looking at another 8 to 9 hours. So, our target will be to see that the container whichever comes in out of Dadri ICD should reach Mundra within 24 hours. And the same thing should not happen. That's the target. This is the dream with which DFC has been conceived, and we are now trying to fulfill that dream. Our USP has been the speed and then the quality of service, transit times and transit guarantees. In this regard, we have made a small effort. What we have been trying to do this for all customers is that we will be providing access to see your train. So in that, today, Sanjay, in your name, we have created a page. We have given the authority to you, as Director of Operations, I shared that authority to Sanjay. You can see the visibility. This is the page specially created for Container Corporation. We will give the authority to
access this page to container officials, container corporation officials. Once they open it, the visibility of the train will be live. The live model of the train. And if you press on any train, just press on any train, the details of the train will be visible. How is it moving and how is it running, including the train detentions en route and how much speed it is running. This is the live model. These are all the details which are available. And you will see at against every station how much extra time is taken or how much extra time is occupied. So you can see that entire detention in whether it is in the block section or it is in the mid section, and how the train is moving. It is a dynamic model and it gets updated every 2 minutes, 3 minutes. This will be given, so container corporation will be able to see. This is going to be extended to other customers, but we said container being our today ICD Dadri celebrating the 20th anniversary, we should give this. So container is given this entire access. So this will be useful for each customer also. They will be able to give the prediction, also see that the trains will be received and trains will be moved. Today we are operating this Rewari to Dadri in a fixed time slot of about 16 hours.